we are doing photoelectric effect. This chapter is known as a dual nature of light and radiation. Dual nature of radiation and matter, in fact. So photoelectric effect, we have seen phenomena in which electrons are emitted due to the photon falling onto the metal surface. All right. तो उसमें हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंटल स्टडी में by Leonard and Hallbeck, उन्होंने that evacuated tube में they did some experiments and came out with the conclusion that current जो है intensity पर depend करता है, current depends upon the intensity of the incident radiation, and उनको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो कट ऑफ पोटेंशियल लगता है that depend upon the frequency of incident radiation. इनकी frequency पर depend करता है. Current इसके intensity पर, intensity means more photons, more intensity means more photon, और frequency जो है that must be related with the energy. Therefore photons, therefore cutoff potential needed is more. That's what we did. Frequency का यहाँ पर था, देखो graph. More frequency means more cutoff potential needed, and also different metals का जो experiment था frequency and stopping potential का parallel lines हैं, but this particular point, least frequency for which photoelectric phenomena is possible is called, इसको क्या बोलते हैं, threshold frequency. Threshold frequency मतलब least beginning frequency है ना, minimum possible frequency from where the photoelectric phenomena starts. Photoelectric phenomena is what? When the light falls or radiation falls onto the metal, electrons comes out, है ना, जो हम लोग देखते हैं automatic opening of the doors at showroom, they are based on the photoelectric phenomena. Somebody approaching to the door will be interrupting the radiation. Radiation interrupt होगा. Somebody crossing the door, है ना, देखो ऐसा. Approaching the door will interrupt that radiation falling onto the photosensitive plate. That photocurrent, photoelectrons will no longer be there for that moment. Current will be zero. Then door opens. The moment we cross it, again this phenomena starts, and again it gets closed. So many things are depending upon this phenomena. In fact, this phenomena is obtained by the device called photocells. यहाँ पर photocells था कहीं पर, somewhere it was there. ये ऐसे बना लेते photocells को, और उससे ये which works on the principle of photoelectric effect. ऐसे इस तरह से रहेगा. Can you see? ऐसे रहते, तो फिर उसको यूज करते सर्किट में फॉर डिफरेंट पर्पजेस. We use it for the different purposes. Automatic counting of the audience entering into the auditorium, or measuring the light in the cricket ground, anti-theft devices, burglar alarm. So many uses I told you. So that much we have seen. Any difficulty so far? एक और पॉइंट बताया था मैंने, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे सारे कर्व ज्वाइन होंगे डिफरेंट इंटेंसिटीज के. ये I1 का था, ये I2 का, ये I3 का था. फ्रीक्वेंसी फिक्स है, this point will be fixed. All the curve will be joining at this particular point where the cutoff potential will be same. Whereas intensity fixed है तो curve ऊपर join constant है, all the curve will be joining here at top where the current will be constant, saturation current will be constant. The intensity constant है तो current constant होगा, because current and intensity directly proportional.
है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, कट ऑफ पोटेंशियल will be constant because these quantities are directly proportional to each other. ठीक है, यहाँ तक हो गया था, नो डाउट टिल नाउ. Yes, no doubt. आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया था. थ्रेशोल्ड frequency or cutoff frequency also we are defined. All the three definitions were starting with the minimum. Work function की, threshold frequency की, cutoff potential की, all three starts with the minimum value. Now, तो ये एक्सपेरिमेंट जो किए लेनार्ड एंड हॉलविक, ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर देयर, जो हमने अभी डिस्कस किए वो सब एक साथ लिखे. ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? Photo current directly proportional to intensity of radiation, I directly proportional to I. Stopping potential is independent of intensity. Intensity बढ़ाने से stopping potential नहीं बढ़ाता, नीचे all the graph were joining at single point where stopping potential was same for all, है ना. ये दोनों एक ही ग्राफ के पॉइंट हो गए. नेक्स्ट ग्राफ जो ड्रा किया था, for photosensitive material there is cutoff frequency below which no photoelectric effect will take place. This is photoelectric effect. And above the threshold frequency cutoff potential and kinetic energy are directly proportional to frequency. ये दोनों terms, दोनों का both looks like, and here also both look alike, and they also look alike. cutoff potential पे kinetic energy भी depend करती है, तो ये तीनों kinetic energy and cutoff potential both are directly proportional to frequency of incident radiation. So experiments say they could come to know, but we'll see that why it is depending on this. That equation will be there today. Einstein equation will also support this point. And it is instantaneous phenomena. Time lag is negligible, that is 10 to the power minus 9 seconds is the time lag. Moment, it means moment the incident radiation falls, electrons will be emitted. 10 to the power minus 9 is very negligible time. It can be called instantaneous phenomena. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेम ग्राफ में थे और ये नेक्स्ट ग्राफ में था. एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट, द इंस्टेंटेनियस. ऑलराइट, तो after this, but these scientists could not give the formula, है ना. So after this, Einstein was the one who gave the formula, and he could support this point and other points. Meanwhile, what will be the answer of this question? In photoelectric experiment, anode potential is plotted against the plate current. यहाँ पे आपका करंट है, फोटोलिटिक करंट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड. यहाँ पे उन्होंने एनोड लिखा है, बट इट इज बिटवीन सी एंड ए कैथोड एंड एनोड. पोटेंशियल डिफरेंस है ये. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज टू बी करेक्ट? बोलिए. If we watch the graph closely, what does this point say? ये point क्या बता रहा है यहाँ पर? B and C are joining here, means joining at top is indicating दोनों की intensity same है.
A and B are joining here means they have the same cutoff potential. Joining here means same cutoff potential. Joining at top means they have the same intensity. That's what we have discussed just now. अभी हमने जो डिस्कस किया अभी ऊपर, सेम पोटेंशियल, सेम कटऑफ पोटेंशियल होने से यहाँ पे ज्वाइन करते, सेम इंटेंसिटी होने से ऊपर ज्वाइन करते कर. तो which of the option is correct? Go through and tell me. The study there. D. Study. D is the correct answer. Yes, D is correct answer. यहाँ पे क्या लिखा है? A and B have the same intensity. No, इसकी इन दोनों की different है because they are different. Currents are different. इसका कम है, इसका ज्यादा है. अगर इंटेंसिटी सेम होती तो करंट सेम होता, तो ये रॉन्ग हो गया. B and C have the same. B and C have different intensity. No, they are together here. A and B will have different intensities. Yes, in case A is different intensities, therefore different current. While A and C have the equal frequency. No, A is cut meeting here and C is meeting here. तो C का कट ऑफ पोटेंशियल मोर है. फ्रीक्वेंसी सेम होने से कट ऑफ पोटेंशियल सेम होता है. दिस इज आल्सो रॉन्ग. B and C have the equal intensity. Yes, joining together. While A and B will have the same frequency. Yes, here. So D is the right answer. इसी को अगर एडवांस लेवल बनाना है तो अभी ये एडवांस लेवल बन गया. ये भी करेक्ट होगा. देखो, A and B will have different intensities. Yes, different intensity अलग अलग है ये. And B and C have the different frequency. Yes, B and C have the different. इस टॉपिक में ये भी करेक्ट हो गया. इस वजह asked in advance, तो उसको मैंने सिंगल ऑप्शन कर दिया because we are dealing with the single option correct. ठीक है. JEE advanced, they ask the multiple option correct. Some questions are more than one option correct. So like this question, same question will change in. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आते हैं लाइक दिस ग्राफ के. तो यू शुड बी नोइंग द करेक्ट आंसर. मूविंग फर्दर. Now later on, after many years of that study, that Einstein gave the relation because scientists were of the view that if we have the low frequency, but frequency is low, but if you expose the metal for longer duration, अगर time बढ़ा दें, slowly they should receive the sufficient energy and come out. High intensity बढ़ाने से they should be receiving the sufficient energy after some time, but it was not happening. Certain frequency के नीचे things were not happening. So Einstein could get the clue that there must be some wave nature may not be the correct explanation for this. So he thought about the quantum nature of light, in which each energy particles called photons. Light is consisting of what is called energy particles called photons or quantas. Light is we can say quantized, and energy depends upon the frequency h nu or hf. So energy of photon is hf.
when it falls on the plate, one photon will be handing over the energy to the electron inside the plate. This electron will consume some energy to come out because it is bound to the nucleus. तो उसको लिबरेट करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी. दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और इसकी एनर्जी HF है. बाकी एनर्जी जो सिंगल दिस प्रोटॉन will hand over all the energy to the single electron as a kinetic energy Ke max, which will consume the minimum energy to come out, called work function. It will be the fastest one. So Ke max will be difference of these two, energy of photon minus work function of the metal, क्योंकि ये एनर्जी तो कंज्यूम हो गई. तो that's what is the Einstein equation. Ke max, kinetic energy of the most energetic electron is difference of energy of photon minus work function of metal. So it is based on energy conservation. मतलब फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो रही. एक तो वर्क फंक्शन, मेटल से रिमूव करना है उसको, जो बची हुई एनर्जी है दैट इज प्रोवाइडेड एज काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल फोटोन विल रिमूव सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली. जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी that will be reflected in the form of kinetic energy. So that's what he gave. It is based on energy conservation. So according to him, radiation energy is built up of the discrete units called quantas of energy or photons of energy. Each quantum has the energy HF or h nu. In photoelectric effect, electron absorbs the quantum of energy. If this energy exceeds the minimum energy needed for electron to escape from the metal surface, which is called work function, then electron is emitted with the K max. तो ये सब आपके समझने के लिए है. तो you can just be brief. इसको इतना एक्सप्लेन न करना. If energy of photon is HF, energy of photon is used in two parts, है ना. One to liberate the electron, other to give the kinetic energy. है ना. तो kinetic energy will be difference of energy of photon minus work function. इसको briefly लिखिए, इतना डिटेल नहीं लिखना. Clear? It is just simple equation for which he got the, but it was difficult to explain. Means many scientists could not get this clue. They were thinking on the lines of the wave theory. Therefore, explanation was not coming for that photoelectric phenomena. Or based on energy conservation, it is based on energy conservation. फोटॉन की एनर्जी दो पार्ट में यूज हुई. एक लिबरेट किया उसने इलेक्ट्रॉन को मेटल से, और दूसरा बाकी बची हुई एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को हैंड ओवर कर दिया उसने. ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. More tightly bound electrons जो इंटीरियर ऑर्बिट में, they will emerge with the less kinetic energy than K max. K max is the energy of fastest electron. ऊपर हमने लिखा भी था मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेंगे. दे विल कंज्यूम मिनिमम एनर्जी. फाई नॉट इज द, ये फाई नॉट है मिनिमम, इट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. जो मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा. गॉट इट? सिंपल इक्वेशन, नथिंग मच टू रिमेंबर हियर. We know the energy of photon, we know the work function, and we know this kinetic energy of electron. This equation explains all the observation done by the previous scientist. हमने experimental study पढ़ी थी, इससे सब explain कर सकते हैं. They didn't have the equation, but they could get the conclusions by experimenting. Later on, Einstein gave this equation. All the previous observations can be cross-checked.
लेट्स सी प्रीवियस अभी ऑब्जर्वेशन जो थे मैच कर रहे हैं इस इक्वेशन से। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी पे है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी गोज अप काइनेटिक एनर्जी गोज अप। तो ये हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगा था, फिर उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी तो सीखा था हमने, ई वी नॉट। तो मोर फ्रीक्वेंसी more kinetic energy, more stopping potential. So that's what coming from equation. Kinetic energy of electrons depends upon the frequency of incident radiation. Frequency of incident light, incident radiation. ठीक है. Second one, if frequency of incident radiation is equal to threshold frequency, V naught will be 0 because ये V naught है. तो ये अगर F naught हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई. अभी हमने ग्राफ पढ़ा था ना लास्ट वन, if frequency is equal to threshold frequency, we don't need the cutoff potential. ये लास्ट वाला जो सीखा था हमने, ये देख, कैन यू सी इट हियर? cutoff potential, I mean cutoff frequency, दोनों सिंबल है, न्यू नॉट और एफ नॉट. It is the minimum frequency of incident radiation for which cutoff potential required is 0. ये वाला, we don't need the cutoff potential, 0 है. अपने आप वो रुक जाते हैं, बाहर निकल, electrons will just come out and remain there. We don't have to stop them, don't have to apply the negative potential. So that's what also point is used here. Equation में देखो, if frequency is least, that is the cutoff frequency or threshold frequency, cutoff potential required is 0, and these cutoff potential and kinetic energy are directly proportional to each other. So kinetic energy of electrons will also be 0. तो यहाँ पे put कर दो, so we get this relation. 0 is equal to hf naught minus phi naught. तो वर्क फंक्शन का फार्मूला मिल गया, एच एफ नॉट. वैसे भी हमने डिफाइन किया था मिनिमम फ्रीक्वेंसी का. आई मीन वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो वर्क फंक्शन का रिलेशन भी मिल गया हमें. अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, वी गेट इज दिस इक्वेशन. फाई नॉट की वैल्यू ऊपर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन मिल गई आपको. ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी आपको. इट विल बी गिवन टू यू incident frequency and cutoff frequency. So you need the K max or V naught. E V naught के बराबर होगा. तो V naught चाहिए तो V naught निकाल सकते हैं, K max चाहिए तो K max निकाल सकते हैं. Only thing we need the two frequencies. This is the incident radiation की frequency है. This is the threshold frequency. This will depend upon the metal. And this is incident. तो मेटल, हर मेटल की अलग अलग होगी. हर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे फॉर द सेम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. दिस इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स एंड दिस इज इक्वेशन गिवन बाय आइंस्टाइन, एंड उसको फर्दर हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? This is useful for numerical Yes. point of view, and it comes from the Einstein equation only. This is the Einstein equation. Einstein equation for what? For photoelectric effect. He has given so many equations, but what we are discussing, photoelectric equation. All right. अगर आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं. H तो कांस्टेंट है, that will be given to you, Planck's constant.
नाउ सेकंड पॉइंट जो था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का था, है ना. लेट्स सी दैट इज प्रूव्ड और नॉट. यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, लेस है, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव. यहाँ पे अगर ये वैल्यू लेस है और ये मोर है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, नेगेटिव आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती. इन अदर वर्ड्स देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा. दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट कि if frequency falls below the certain frequency called threshold frequency, no photoelectric effect possible. So that suggests यहाँ पे kinetic energy negative हो रही है. Negative is not there. Kinetic energy either zero or positive. Second point prove हो गया. One of the points, one more point proved, which was observed in the experimental study. और थर्ड पॉइंट उसने डायरेक्ट ही बोला. थर्ड पॉइंट कम्स फ्रॉम हियर, इंटेंसिटी वाला जो था, मोर इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटो क्वांटास. उसने क्वांटास का कॉन्सेप्ट दिया. मोर इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, फोटॉन्स ज्यादा बनेंगे. दैट फोटॉन्स मींस मोर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, मोर फोटो करंट, है ना, मोर फोटो करंट शॉर्ट में लिखते हैं इसको. मोर क्वांटस मींस मोर फोटोइलेक्ट्रिक करंट, more photocurrent. All right, that also comes from his thinking. Light is quantas, and therefore it is controlled by the photons, photoelectric effect. More photons means more more electrons, because one photon will emit one electron maximum, minimum zero. ऐसा नहीं है कि एक मिनट जस्ट मिनट, ऐसा नहीं है कि all the photons will emit the electrons. Very few photons are able to emit it, and hardly less than 1% or less than 0.1% photons are able to emit. ठीक है, तो ये पॉइंट सब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उसके साथ मैच हो रहे हैं. एंड फोर्थ पॉइंट तो इंस्टेंटेनियस था, दैट इज. अच्छा, एक और पॉइंट देखो यहाँ से, देखो ऑफ कोर्स वो स्लोप के बारे में पैरेलल ग्राफ है, पैरेलल जो थे लाइंस, ग्राफ ड्रा किया था हमने, ए एंड बी की पैरेलल लाइन थी ऐसे, ए के लिए ऐसे था, बी के लिए ऐसा था. दैट व्हाई द पैरेलल लाइंस आर देयर, दैट सजेस्ट बाय द इक्वेशन के मैक्स जो है हमने टॉपिक में सीखा था, के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट. याद है ये, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी नॉट. ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी. इनिशियली वी हैड डन इट. तो दैट रिलेशन ये आपको लर्न करना पड़ेगा. तो करंट के मैक्स की जगह ये पुट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन. तो वी गॉट दिस रिलेशन, ई को नीचे शिफ्ट कर दो तो वी गॉट दिस रिलेशन, कट ऑफ पोटेंशियल का मिल गया फ्रीक्वेंसी के साथ. जो लास्ट ग्राफ ड्रा किया था हमने कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. It predicts the graph between V naught, gives the graph ठीक है. जो लास्ट वाला था उन्होंने एक्सपेरिमेंट से किया था, बट यहाँ पे इक्वेशन मिल गई हमें. इट्स स्लोप इज h by e constant.
इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल, कांस्टेंट है, देखो यहाँ पर h by e है, एक मिनट है, एक मिनट, विच इज h by e स्लोप। ये इक्वेशन कैसी दिख रही है आपको? y इज इक्वल टू mx माइनस c, तो ये y v नॉट है, y एक्सिस पे था, x जो है फ्रीक्वेंसी था x एक्सिस पे, तो स्लोप ये होगा विच इज कांस्टेंट। देखो ये प्लेन कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, उसके मैग्नीट्यूड है, तो दोनों कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल, मेटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लास्ट ग्राफ का जो स्लोप है दैट आल्सो वाज गिवन करेक्टली, all metal will have the parallel slope, constant angle. Getting this point? There, an issue, your problem seems to be okay. You are not responding. So your voice was very low. I couldn't hear it first. Okay, now it's okay. Yes, so now it Yes. is okay. Okay, तो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस यहाँ तक डन था। No, Yes. so you explained all, it just got cut at last minute. तो लास्ट जो ग्राफ था वो कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस ये वाला ऐसा, तो ऐसे ग्राफ ऐसे लाइन आई थी ना, तो बोथ द लाइंस मेटल ए मेटल बी की पैरेलल थी, दैट कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन आइंस्टाइन इक्वेशन ओनली, ये वाले से, ये हमने के मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो वी गॉट द ग्राफ बिटवीन potential and frequency, so that suggests that slope is constant for all the metal independent of metal। ठीक है, तो this is the crux of the matter, these many मतलब same one equation only, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना, फिर हमने के मैक्स की वैल्यू उसमें पुट कर दी, तो हमें ये इक्वेशन आ गई। तो all the points which were obtained by the experimental study by Leonard and Hallberg was later proved by the Einstein equation। Another scientist in 1916, other scientist Millikan proved the validity of Einstein's photoelectric equation। He did other experiment, quantization nature of charge, he proved Millikan. So he could also that see that this is the initially many scientists were not accepting Einstein's equation, know how the light is quantized, how the that photons are there, it is the wave only. But later on, other experiment, Millikan's oil drop experiment and all, they also proved this quantization nature of charge, and in that they could prove this also। Clear? This is all about your Einstein equation। इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है अदरवाइज। The main equation is first one, from that we have changed all the things। So we can draw the graph, we can do the numericals। के लिए देखो एक इसका ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, they can ask you draw the graph between K max and frequency, तो ये भी सेम आएगा ऐसा जैसा कि ये आया था, इसका दोनों का सेम होगा, बट इंटर स्लोप चेंज हो जाएंगे, विद डिफरेंट हो जाएंगे, बट ग्राफ विल लुक अलग, बिकॉज दोनों में स्लोप और एक कट ऑफ एक इंटरसेप्टर है, इसमें भी एक स्लोप, अगर काइनेटिक एनर्जी का स्लोप पूछेंगे, काइनेटिक के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी का स्लोप पूछेंगे तो एच है, और वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी का स्लोप पूछेंगे तो एच बाई ई है। स्लोप इज मोर, h is more or h by e is more।
होगा H. one of the graph is giving you what is called slope, one of the kinetic energy का जो ग्राफ होगा इसमें h by e आएगा. This will be more because e is 10 to the power minus 19. That will neutralize 10 to the power minus 34 which is in numerator. तो ये तो स्लोप बहुत कम होगा, ये उससे मोर होगा बिकॉज नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 to the power minus 19 will reduce that minus value of h 10 to the power minus 34. h by e is more. h is very small, 10 to the power minus 34 ये ऑर्डर का है. इनफैक्ट 10 पर minus 33 बोल सकते हैं उसको बिकॉज 6.6 भी है उसमें. more than 5 means close to 10. ठीक है, ये समझ में आ गया. ये these are the questions which you can easily remember and do all the questions. क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन आर मोस्टली बेस्ड ऑन दिस पॉइंट. उससे पहले वन मोर डेफिनेशन फ्रॉम दिस रिलेशन. ये क्या था? व्हाट इज दिस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल? इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है. यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को c बाई लैम्डा लिख सकते हैं. दैट विल बी लैम्डा नॉट बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज f नॉट. तो c बाई लैम्डा नॉट. तो लैम्डा नॉट गिव्स यू द कांसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आल्सो. f naught is threshold frequency. So corresponding wavelength will be threshold wavelength. है ना? So let's do that also. देखो अभी हमने वर्क फंक्शन का ऊपर रिलेशन सीखा आइंस्टाइन इक्वेशन से. तो फ्रीक्वेंसी इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट. यहाँ वेवलेंथ रहेगा. आप बोलेंगे क्वांटाज है, but both the theory goes together. Wave theory and quantum theory goes together. Light will have certain wavelength. So wavelength is lambda naught. तो ये रिलेशन बन गया. तो lambda naught को इधर जाओ और इसको नीचे ले जाओ. lambda naught is sc upon phi naught. अगर आपको वर्क फंक्शन पता है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं. मिनिमम आई मीन ये lambda naught. तो lambda naught है क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी डेफिनेशन मैक्सिमम से स्टार्ट होगी. फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. इट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अप टू व्हिच देयर विल बी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. बियॉन्ड दिस वेवलेंथ फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज the photon will go down. बढ़ता है, फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है. कम हो गई तो it will not be able to remove the electrons because they need certain energy. इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए ना, जितनी एनर्जी से बाउंड है वो बाउंड कराना पड़ेगा. वेवलेंथ गोज अप, goes down, energy of photon goes down. देखो for photoelectric effect, देखो यहाँ पर देखो समझो. for photoelectric effect, इसको भी photoelectric effect लिखते हैं. for photoelectric effect वेवलेंथ जो है, wavelength of incident radiation should be less than or equal to threshold wavelength. वेवलेंथ के इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ जो कम होनी चाहिए, है ना. ऐसे लिखो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
lambda should be less than or equal to threshold wavelength of the metal. लैम्डा नॉट मेटल पे डिपेंड करेगा ना, डिफरेंट मेटल विल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि उनकी उनकी जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन कितने दूर है न्यूक्लियस से उतना वर्क फंक्शन कम होगा, उतनी एनर्जी कम लगेगी उनको रिमूव करने के लिए। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ग्रेटर देन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें ग्रेटर चलेगा, इसमें लेस। इंसिडेंट रेडिएशन शुड हैव लेस वेवलेंथ, लेस वेवलेंथ होने से फ्रीक्वेंसी मोर होती है, एनर्जी मोर होती है फोटॉन्स में। गेटिंग? बोलिए। Yes, sir. एक क्वेश्चन देखो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन का पेट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, देयर आर टू मेटल प्लेट्स एक्स एंड वाई फॉर विच work function is 2 eV and 4 eV, which will have more threshold wavelength. ये फार्मूला है आपका। X. Yes, lambda naught is inversely proportional to work function of metal, है ना? तो जिसका ये कम होगा वर्क फंक्शन, x का कम है, इसका मोर होगा, फिर therefore x. Got it? This is the formula. अगर वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है तो वर्क फंक्शन पता होना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वर्क फंक्शन पता होना। ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा, वो आपको दिया होगा ईवी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, बाद में उसको जूल मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईवी को जूल में कन्वर्ट करते हैं। समझा? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ओके, इस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगा, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल की डिफरेंट होती है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही ये भी। नो प्रॉब्लम। The issue of sound or what? No, sir. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ओवर न्यूमेरिकल थोड़े देख सकते हैं, जैसे ये है आपका देखो न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8, threshold frequency for certain metal is this much, f naught और nu naught is given, if light of ये f दिया हुआ है, predict the cutoff voltage for which photoelectric, तो cutoff, तो ये फार्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन से अभी जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी देखो, मोस्टली these are using, we are using in the almost all the equation। तो k max का रिलेशन ये था, उसमें भी हमें दोनों फ्रीक्वेंसी पता है, h is the constant, k max is equal to ev naught, इसको ev naught में शिफ्ट कर दिया, तो ये कांस्टेंट, दिस इज गिवन, तो v naught आ जाएगा, कट ऑफ वोल्टेज आ जाएगा, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेशंस आर योर, यू हैव टू जस्ट मैनेज, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी कैलकुलेशंस, यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर वन। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वन क्या है, दी हुई है आपको ये वाली, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स हैव द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, ये के मैक्स को हम हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं, के मैक्स को, तो मतलब ये इस साइड में चेंजेस हो रहे हैं, बाकी ये तो सेम है। तो मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, निकालना क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
एफ नॉट निकालनी है इसमें एफ नॉट। ठीक है, तो के मैक्स में हमने दूसरे चेंज किए, याद है ये क्या था? वी मैक्स इज द एनर्जी ऑफ energetic electron, यहाँ पे दिया electrons with the maximum speed, Vmax is the speed, in fact is the maximum speed, that is speed of most energetic electron. So mass of electron will be given to you, the constant है देखो, h and d will be given. Vmax is the speed of most energetic electron, most energetic कौन से रहेंगे? जो outermost, those who consume the work, minimum energy to come out, that is equal to work function. हो जाएगा? Calculations again. This is the question number 10. F नॉट निकालना है आपको, है ना? ये दिया है, ये दिया है, दोनों कांस्टेंट है। F नॉट आ जाएगा इससे 4 इन, ये कितना आ रहा देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ, ये आंसर आएगा 4.73 into 10^14 hertz if you solve it. Almost क्वेश्चंस है CBSE में 11th वाला। तो ये क्वेश्चन हमने बिगिनिंग ऑफ द पहले ही कर लिया था, ये हमने आइंस्टाइन इक्वेशन, आई मीन दैट एक्सपेरिमेंटल स्टडी से भी पहले कर लिया था। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने 2 मेटल प्लेट के लिए। यहाँ पे दे हैव द 4 मेटल प्लेट्स, वर्क फंक्शन इज गिवन फॉर द डिफरेंट मेटल प्लेट, सोडियम, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, निकल, सबका दिया हुआ। ये कितना वर्क फंक्शन दिया यहाँ पे मैंने लिखा। तो सबके ऊपर कितने रेडिएशन का, वेवलेंथ का रेडिएशन 3300 ए नॉट का रेडिएशन सबके ऊपर पड़ रहा है फ्रॉम सर्टेन सोर्स 1 meter away from the photo cells. Okay, what happens if laser is nearer 50 centimeter away? उससे पहले हमें ये भी तो बताना है, एक मिनट, which of, ये पहले ये बताना, which of these metals will not give the photoelectric emission for the radiation of this much? बोलो कैसे करेंगे, बताइए। हाउ टू डू? वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन तो दिया ही है ना। नहीं, वो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है एच एफ नॉट, उससे निकाल। उसको कुछ नहीं करना है, वर्क फंक्शन को कुछ नहीं करना है, उसको निकालते बढ़ेंगे तो 4 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू ओनली 1 कैलकुलेशन। ये तो था ऐसा क्वेश्चन, देखो हाउ डिड वी डू दिस। एनर्जी निकाल लो, दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस, ये एमिट करेगा, ग्रेटर देन दिस एमिट करेगा, लेस देन दिस तो नॉट, इट विल नॉट एमिट, लेस देन दिस नॉट एमिट। तो जिससे ज्यादा है अप टू दैट मेटल प्लेट शो द फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे निकाल लो। कैसे निकालेंगे एनर्जी? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज hc by lambda, h is 6.6 into 10 to the power minus 34, c is 3 into 10 power 8, lambda is 3.3 into 10 to the power, कितना हो जाएगा, -7 बचेगा। ए नॉट है 10 पावर -10 होता है, तो 3 डेसिमल हमने इधर शिफ्ट किया -7, तो ये आपका आ गया जूल्स में, और 1.6 से डिवाइड कर दो, 1.6 into 10 to the power -19 से डिवाइड कर दो, ईवी में आ जाएगा। If you solve it, it will be coming 0.206 EV. नहीं, sorry, 2 point something. एक मिनट देखो कितने आ रहा है, 2 point नहीं 3.7 आ रहा है क्या?
ठीक है, 3.7 आएगा, करेक्ट, 3.7। मैंने रफ आइडिया भी दिया था कैसे निकालते हैं। 1240 बाई 3 नैनोमीटर में लिख रहे हैं ना इसको, 3330 EV NM। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो भी गया। 124 डिवाइड बाई 33 विल बी क्लोज टू 3.7, ठीक है, बट दैट विल नॉट वर्क। हाँ, उसको पहले यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू कैन राइट इट। नाउ विच इज ग्रेटर देन function come energy of photon is this much. First two plates have the least less work function this, तो कौन सा sodium, therefore sodium and potassium will emit. Other two have the more work function, 4.17 and 5.17, so they need this much energy to take out the electrons, but photon has lesser energy, it will not be able to eject. The first two are to emit the photoelectric electrons, all right. और उसमें क्या बोला, लेजर प्लेट इज लेजर सोर्स इज ब्रॉट नियरर, इसको और पास में ले आओ। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, करंट बढ़ सकता है। इफ यू ब्रिंग द सोर्स क्लोजर, current increase if number of photons are falling more, phenomena will not change, cutoff potential will not change. Photoelectric phenomena, it is not happening with these two, it will never happen if you touch the source even, because that depends upon the certain wavelength, certain frequency and wavelength. That is not going to change if you bring the source closer, so no effect. ये दोनों ही emit करेंगे, that's all, no change. Because that intensity, because intensity may change, that is not affecting the requirement of cutoff wavelength, cutoff frequency, that is not changed. तो इसीलिए still these two will be emitting, that's all. They will never emit unless we change the source. पास में लाने से कुछ नहीं होगा, सोर्स का वेवलेंथ कम करना पड़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, फिर दे में आल्सो इमिट। इफ अगर इसकी टू कर दें, इसको हम 2200 कर दें, तब क्या होगा, 22 है ना, तो इट विल बी रफली 124 डिवाइड बाई, ओके, टू वो कर दो 200 करेंगे, 6 समथिंग, वर्क फंक्शन विल बी 6 पॉइंट समथिंग, 6.2, देन ऑल विल लिमिट। इसकी वेवलेंथ 2000 नोट कर दी, ऑल विल लिमिट। Getting or not? Yes, sir. This is important question, a very important question. These type of questions are repeatedly asked in the board and competitive examination. That's all from my side. Continue further. Tomorrow again, some of you have the examination. No class tomorrow. Next class will be day after tomorrow. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, चलो, sir. Thank you, all sir. right. All right. Yeah, thank you, sir. Okay.